He's positive for ischemia. But What are his risk factors? just hypertension. No other risk No factors. other risk factors. Ever he been evaluated for dyslipidemia? No, I don't think so. So how can we say that he is not Okay. dyslipidemic? So you have to do Fasting. cholesterols. And is there a positive family history? No. Sir, I have the cholesterol reports are there. These are two reports are there. Lipid profile? Yes, Okay, we'll see that. in this case. Do you have sugar? Yes, sir, I have all. So he's diabetic as well. Diabetic, his cholesterols are there which are almost normal. Cholesterols are not. And you're diabetic for how long? Sir, since last 2011. Okay, 7-8 years. Yes, sir. Is that for the first time you were diagnosed? Yes, sir. So how is the control? Is it? Sir, how I control? Sir, by my But how is it? Your hemoglobin A1C is all the time between 6 and 7? Yes, sir, like that. Sir, That's the control. Yes, sir. अच्छा, do you have any symptoms during exertion? चलने फिरने में कोई तकलीफ? सर चलने फिरने में मुझे तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होती. मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम है. आई हैव ओनली वन प्रॉब्लम कि जब मैं सर कोई वेट वगैरह उठाता हूँ या कोई जैसे गाड़ी वॉश कर रहा हूँ या कुछ ग्लासेस वॉश कर रहा हूँ अपने घर के, कुछ भी कर रहा हूँ, उस वक्त मुझे 15 मिनट के बाद है ना मैं ये फील करता हूँ कि अब मैं नहीं इसको कंटिन्यू कर सकता. वजह अब मैं क्या? रेस्ट क्या करूँ. होने लगता है? मुझे ना प्यास लगने लगती है, मेरा हला खुश्क हो जाता है बिल्कुल. अच्छा, excessive है. हाँ, मैं वाटर की तरफ भागता हूँ. पहले कभी भी ऐसा फील नहीं करता था. यानी और उस काम से भी रुकना पड़ हाँ, जाता बिल्कुल है. 100% में है ना. Do you think are these symptoms or not? No. These are not These are symptoms not of correct. ischemia. Not He's a diabetic. He can have such symptoms of angina, which is called angina equivalent. Angina. Because what he's saying, doing excessive exertion, he sometimes feel thirsty kind of feeling. This thirsty kind of feeling, क्या है? गले में कुछ महसूस Yes, हो sir, रहा है? मुझे बहुत So actually, it's a mixed explanation. He is having choking, so we have to dig out this kind of things. And this is related to exertion. और आराम करते हैं तो ये कैफियत ठीक हो Yes, जाती है. टाइम लगता है लेकिन हाफ एन आवर के बाद मैं पानी पीता हूँ तो मैं He रिलैक्स हो is जाता हूँ. having angina, but certainly I'll agree it's not CCS 2 or 3. It may be 1 or 2 angina he's having. और ये वाली कैफियत कितने अरसे से हो रही है सर आपको? ये मुझे लास्ट 1 ईयर से हो गई है. 1 year से. कि जब भी आप एक certain level से ज़्यादा करते हैं तो. बिल्कुल. So what we can do, his ETT is also positive at high workload. सर लेकिन सर Almost excuse me, sir. 102 heart rate and 13.5 meds. So he can be kept on medical treatment, and we can do a perfusion scan to look exactly the extent of ischemia, where the ischemia is occurring, and how much is the extent. To decide coronary angio, we'll give treatment to take care of his blood pressure, antiplatelets, statins, all that, and then call him after 3 months of follow-up. सर विदिन 15 डेज में मेरी 2 टाइम्स ETT हुई. जी जी. फर्स्ट टाइम तो वो बिल्कुल ठीक. क्लियर थी लेकिन है ना Second में थोड़ा सा नहीं, आया वो है. मशीन के एरर की वजह से उन्होंने